अगर मैं आगे चला जाता हूँ तो आप भी मेरे साथ आ सकती है, ज़रूरी तो नहीं है। नहीं समझ में आता है आगे मैं आ सकती हूँ, ज़रूरी थोड़ा फिर आप रिपीट करोगे। It's a matter of putting together things. Morning chanting, page 2. Akato bhagavata dhammo supatipanno yasya bhagavato savak sangho tamayam bhagavantam sadhammam sasangam ime sakari yatha arham arupite abhipujayama sadhuno bhanti bhagavan suchiraparinibutopi pachima janata nukampamanasa ime sakari dugat pranakara bhuti patikanatu amhakam vigratam hitaya sakaya arham sama sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhivademi Swakatu bhagavata dhammo dhammam namasami supatipanno bhagavatu savak sangho sangham namami Handmayam buddhasya bhagavato pubbabhag namkaram karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa अब हम बुद्ध धर्म और संघ वंदन आपको पढ़ेंगे हंदमयम बुद्धाभिथुतिं करोमसि यो सो तथागतो अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्य
तथादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति यो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं ससमनं ब्रह्मणिं भजं सदेव मनुस्स संयम अभिन्नः सच्चिकत्वा पवेदेसि यो धम्मं देशे आदिकल्याणं मध्ये कल्याणं पर्योसान कल्याणं साधं सव्यञ्जनं केवलं परिपूर्णं परिशुद्ध ब्रह्मचर्यं प्रकाशेसि तमहं भगवन्तम् अभिपूजयामि तमहं भगवन्तं शिरसा नमामि आनंदमयं धम्माभिधूतिं करोमसे यो सो स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको तं वेदितव्यो विनियोहीति तमहं धम्मम् अभिपूजयामि तमहं धम्मं शिरसा नमामि आनंदमयं संगाभिधूतिं करोमसे यो सो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याम् तमहं संघम् अभिपूजयामि तमहं संघं शिरसा नमामि अब हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के पाठ करेंगे। आज नहीं हिंदी पढ़ो ना। Connected to 6B77382D.
1 + 3T, disconnected, ready to pair. Connected to 1 + 3T. Sutang ekang samayang bhagava paranasiyang viharati sipatane megadaye tatrako bhagava panchavagye bhikkhu amante sidave me bhikkhave anta Bapacitena nasevita payocayang kame sukama sukalikanuyogo hino kamo botu janiko analiyo anata sangito yocayang atakila matanu yogo dugo analiyo anata sangito ete te bhikkhave upo ante anupadhamma majjhima patipada tathagathena abhisambuddha cakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambuddhaya nibbānaya samvatati khatama ca sa bhikkhave majjhima patipada tathagathena abhisambuddha cakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambuddhaya nibbānaya samvatati ayameva ariyo atangiko mako seyati tang samaditi sama sangkapo sama waca sama kamanto sama hajiwo sama wayamo sama sati sama samadhi ayangko sabhikkhave majjhima patipada tathagathena abhisambuddha cakukarani jnanakarani upasamaya abhinyaya sambuddhaya nibbānaya samvatati itang kopana bhikkhave dukkhaṃ arya sajjaṃ jati pidukkha jara pidukkha maranaṃ pidukkhaṃ soka parideva dukkha dhammana supayasa pidukkha apiyehi sampayogo dukkho piyehi vipayogo dukkho yampi janalapatitam pidukkhaṃ sankitena panchupadana kanda dukkha idam kopana bhikkhave dukkha samudhayo arya sajjaṃ yayam tanha pono bhavika nandiraga sahagata tatra tatra vinandini seyadidam kamatanna bhavatanna vibhavatanna idam kopana bhikkhave dukkha
นิโรโธอริยสัจจังโยทัสสะเยวะทันหายะเสสะเวราคนิโรโธจากุปฏิเนสาโกมุตติยานาลายโยอิทังโกปนาปิกเวทุกนิโรธกามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายังเมวะอริโยอาทังกิโกมาโกเสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิดังโกปนิดังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโกปนิดังทุกขังอริยสัจจังปริญญาทันติเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโกปนิดังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาทาพันธิเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโกปนิดังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหานันติเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโกปนิดังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาถาพันธิเมภิกขเวปุเปอนันตุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโกปนิดังทุกขนิโรโธอ
ริยสัจจังสัจจิกทันติเมภิกขเวภูเปอนันตุสุเทสุธัมเมสุจักขุอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวภูเปอนันตุสุเทสุธัมเมสุจักขุอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทังโกปนิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภเวทาพันธิเมภิกขเวภูเปอนันตุสุเทสุธัมเมสุจักขุอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทังโกปนิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิทันติเมภิกขเวภูเปอนันตุสุเทสุธัมเมสุจักขุอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิยาวะคีวันชเมภิกขเวหิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังกวาตสักการังยถาพุทธังญาณทัสสนังนัสสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัทเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสสะมณพรหมณียปัจจายสเตวมนุสายอนุตตรสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิยโทจักโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังกวาตสักการังยถาพุทธังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสัทเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสสะมณพรหมณียปัจจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิญาณัญจปนเมทัสสนังอุตตปาทิอาคุปาเมวิมุตติอายมันติมาจาตินาทิธานิปุนาภาวติธรรมโวจะภะคะวาธรรมนาปัญจวัคคียภิกขุภะคะวะโตปัสสิทังอภินันตุงอิมัสสมิงจะพันเวยากรณัสสมิงพัญญมันเนอายสมโตคันดัญญาสวิรจังวิตมลังธัมมจักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันธังนิโรธธัมมันติภาวติเทชะภะคะวะตาธัมมจักเกภูมาเทวาสาธมนุสาเวสุเงตังภะคะวะตาปาราณสียังอิสิปทาเนมิกตายอนุตตรังธร
ากังภวะจิตังอาปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวะโลกสมิงจิภูมานังเดวานังสาทังสุตวะชาตุมหาราชิกาเทวาสาธมนุสาเวสุชาตุมหาราชิกานังเดวานังสาทังสุตวะตาวทิงสาเทวาสาธมนุสาเวสุตาวทิงสานังเดวานังสาทังสุตวะยามาเทวาสาธมนุสาเวสุยามานังเดวานังสาทังสุตวะตุสิทาเทวาสาธมนุสาเวสุตุสิทานังเดวานังสาทังสุตวะนิมมานารติเทวาสาธมนุสาเวสุนิมมานารตินังเดวานังสาทังสุตวะปรณิมิตวสวัตติเทวาสาธมนุสาเวสุปรณิมิตวสวัตตินังเทวานังสาทังสุตวะพระมคายกาเทวาสาธมนุสาเวสุเอตังภะคะวะตาปาราณสียังอิสิปตเนมิกตายเยอนุตตรังธัมมจักกังภวติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวะโลกสมิงทิทิหะเทนะคะเนนะเทนะมุหุเทนะยาวะพระมโลกาสาธุอาภุกาชิอายัญจตัสสะหาสิโลกดาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมภเวทิยาปมาโนชะโอลาโรโอปาโสโลเกปัตุระโหสิอติกาเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกภะคะวะอุทานังอุดาเยสิอัญญาสิวัตบุคคลดัญโยอัญญาสิวัตบุคคลดัญโยทิฏฐิทังอายสมะตุคนดัญญาสหัญญาคนดัญโยทเววนามังอโหสิทิธัมมจักรปวัฏฏนสุตังนิติตังWe will now listen to a reflection given by Nupur Sumedo from his self-quarantine in Vatratnavan last week. It has been titled Limited Mobility, Unlimited Consciousness. It's available in video form from Amravati Monastery website on Vimeo.
Okay, so good afternoon, Paul. Good afternoon. Today is the 16th of April 2020. And वो यहाँ सो को गए होंगे ना उनके कमरे में, उनको गुड आफ्टरनून कर. अच्छा. Okay, so good afternoon, Paul. Good afternoon. Today is the 16th of April 2020, and you very kindly accepted to do another recording for offering reflections on Dhamma in this time of global seclusion, if I may say. So the first question was from someone who was asking who is homebound, like a lot of people, and using their time to do some formal practice, both in the morning and in the evening at home, and wondering how to use this time of seclusion at home, a lot of free time, how to use that to best benefit in terms of Dhamma. This is, the opportunities we have to reflect on the way it is, because meditation, Buddhist meditation, really is awakening to reality, observing just the way it is. And for each one of us, each separate human being, it's not going to be the same. You're going to feel one way, I'm going to feel another. But this awareness, mindfulness, is the ability to use, to observe, to be the witness of the way it is, the uncritical, unjudgmental witness of the way it is. So we use terms like it's like this phrase, it is the way it is, it's like this, just as a reminder, because we tend to, when, each moment of our lives, we tend to be caught in just reactivity, in habits of reaction. So if we're feeling lonely or bored or frightened or whatever, then we have ways of just reacting to it, either through suppression or indulging into it. But in terms of opportunities in where you're more bound, restricted in movements, you can't just go off to the restaurant or the bar or go visit your friends. The best you can do is phone your friends, from your flat. But it's also the opportunity to observe that frustration, the way we don't like to be with ourselves usually. We like to be caught into the worldly dhammas, of talking with friends, enjoying a nice meal in a restaurant, watching television, going, on holiday trips and tourism, and ways of distracting ourselves endlessly, which are habit patterns we've developed since the culture, worldly culture, is that's the way we've been conditioned. And the Buddha, made it very clear. His teaching, just in 2 sentences, it describes the whole way of dealing with it. It's Sabbe Sankara, all conditions are impermanent. Sabbe Dhamma Anatta, Dhamma is not self. And so these 2 sentences are very profound and quite simple, but it's not a complicated teaching, and it points the way to wake up to reality, to realize Dhamma for yourself individually, rather than just be caught in the momentum of habits that you developed from childhood up to your present age at this time. So you just, this sense of being alone, of loneliness, of frustration, of fear, all these emotions arise that we tend to ignore in an ordinary daily
life experience, because we have developed ways of just distracting ourselves from reality by going to some fantasy world or nostalgia for the past, or having a drink, or smoking a cigarette, or doing something to get our minds off the reality of here and now, because the Dhamma is timeless, and timelessness is something that the intellect, the thinking mind, can't possibly understand. You know, when we try to figure out what timelessness is, no time. Time is a fantasy, is imagination, is the creation of the human mind. Then you try to figure out, what is my experience now? You know, how did I get here? What is it? The reality of the worldly numbers, the material world seems much more real than just the concept of timelessness and pure awareness. So, you know, the intellect, remember, is a condition factor. It's not personal, it's conditioned, you know, from the time you're born, you're kind of programmed to see reality as I am the physical body, the body is me, I am a boy or girl, I get your identity. You're not born with any identity. Like a newborn baby is born, it's a conscious form, human form in consciousness. But it has no name, no identity, and it doesn't think. It doesn't have a developed thinking. We develop thinking later in life. We think in childhood. And we believe the thoughts that we create in our minds. So like meditation is an opportunity to observe. You know, we're not criticizing thinking or telling you shouldn't be thinking, because that would be an impossibility. But to be the awakened awareness of thought is like this, whether it's a good thought or bad thought or boring thought, whether it's true, false, big or small, the size, the quality, the condition of the thought is not the issue, because we reflect on it. It is something, it is a condition that arises and ceases. So by reflecting in this way, we begin to break through the conditioned kind of automatic habitual patterns we've developed in our lifetime, to be able to witness them, to be the Bhutto, or the Buddha, the witness to reality is the Buddha. So by being mindful, we're taking refuge in the Buddha, in the witnessing position of the observer, uncritical, unjudgmental observer of conditioned phenomena as it arises and ceases. And then we have the insight into the fact that when the thinking ceases, when emotion ceases, when conditions cease, what remains is peace, is conscious awareness. Awareness doesn't cease, you know, but the conditions that we're aware of arise and cease, and this constant reflection on this reality, and don't take it, you know, don't believe me in just the verbal sense, but the whole point of the Buddhist teaching is to realize this for yourself. It's something that each one of us can know for ourselves, and not just believe somebody who gives a particular Dharma reflection on a certain day. Okay, thank you for that. And there's another question, that's a couple of questions someone was asking around fear, because this situation where people are cooped up in unusual conditions, and then the threat of this disease that
people can die from, brings up fear. So they're asking, what is the nature of fear? What is this emotion that arises? Fear is a condition. It's not ultimate reality. And for example, right now, the future, when you think about the future with the coronavirus, and when will it cease? When will it go away? Because we don't want it. We don't want the fear of getting this disease and the restrictions and all the news of worldwide. There's no escape. There's no place on planet Earth you can go to really get away from it. So when you're in your own flat, your apartment, with your own body and mind, fear is a kind of primal. And basically it's the animal realm, the mammalian side of our conscious experience, where self-preservation. There's a lot to fear as a human individual form. Our bodies are quite delicate, easily damaged, can be eaten by other animals, and meteorites can come from outer space, and cyclones, hurricanes, coronaviruses. There's so many possible conditions that could hurt us or harm us or kill us. So fear is not to see it as some kind of personal flaw or that you should get rid of it, but recognize fear is like this. It's about the future. If there's a tiger chasing you right in the present moment, then that fear is self-preservation. You don't have time to think and create fear. You just manage to do the best you can to escape the attack from the tiger. But when you're in your flat alone in a condominium in a nice place like Switzerland or any other country, and you have guards and burglar alarms and all kinds of safety mechanisms to prevent burglars or robbers or bandits or strangers coming into your space. We can sit in our comfortable condo and feel very frightened, because what we're doing, sitting in our flat, is we're thinking, and the future is the unknown. You want to hear the good. Tell me everything is okay. Tell me everything is going to be all right. That this virus is going to go away very soon, never come back, and the American economy will get back to normal. It'll be better. It'll flourish beyond belief. You can't really believe how good the economy is going to be in the future. This is what we can do in our time alone by ourselves. And that's just trying to suppress fear, resist the fear that you feel of the unknown. Because coronavirus is frightening, let's face it. Just the news you get from the media and from the authorities, it's very unsettling, and it's like this. So we can be aware when we hear the news on the journalists, the news broadcasters and so forth, they said when we hear this kind of news, we feel like this. So we can try to pretend everything's going to be okay, but that's just, kind of fooling yourself. You don't know that. None of us know that. At this moment in time, tomorrow is the unknown. The reality of here and now is that tomorrow is what I don't know. But you can be aware that you don't know the future. That's the way to realize the future is what you don't know. Because it's a concept of time. Believing in the material world as our reality, then
time is about conditions, about sankharas, about phenomena that changes. If you're born, you're going to die. If it begins, it ends. The reality of that sape sankharani, all conditions are permanent, is true. You can, as you pursue your reflection on the impermanence of your own thoughts, feelings, your own physical existence is impermanent. What you see, hear, smell, taste, touch, think, every emotion, everything that is happening here and now is impermanent. And what isn't impermanent, what isn't changing and conditioned by birth and death is awareness, conscious awareness. So that's why mindfulness is the path to the deathless. In the Dhammapada, the verse, the mindfulness is the path to the deathless, heedlessness is the path to death. So mindfulness is here and now. It's about the present reality of here and now is like this. And you can see the tendency to resist it or to grasp it and indulge in the feelings that arise. And that's the world that you create. That's the conditioned world that you believe is your reality, that is your separate self, your ego. And that ego is frightened. The ego is easily frightened because that's one of the conditions of the ego is to resist. And notice that the way when we experience fear, there's an incredible resistance to it. We want to, how can I get rid of it? How can I get rid of it permanently? And we claim it as some kind of personal flaw, like I shouldn't be afraid, I should be brave. These are ideals about what one should be. But fear is kind of primal to the conditions that we're experiencing here and now. And so it arises and ceases, and instead of resisting it and trying to get rid of it and claiming it as some kind of personal ownership to it, recognize it, welcome it, see it, observe it. It's like this. Fear is like this. And in that way, that which is aware is not frightened. Your emotion might be frightening, might be fear itself, but the awareness of fear, aware of the emotion, is not frightened. It never gets frightened, never gets angry, never is greedy. So, the human condition is one, we're thinking creatures. We're caught in mental conditioning. And this is a great gift in many ways. It's also a curse, is that we tend to believe what we're thinking. We believe in ourselves as a separate personality, as an individual. We believe in the conditioning we have, in our own cultural conditioning, our social conditioning, our religious conditioning. We believe in it. We don't question it. Usually, we're caught from the early childhood into what we're told by our mother, our father, by the neighbors, by relatives, by the priests, rabbis, and so forth. We don't question it when we're children. We tend to believe what we're told. And there's, for all of us, there's nothing seems more real than I am this physical body. I've got to live with this body, and it's an old body now. So, and the conditioning, the cultural, personal conditioning happened when I was a child, and kind of cathected, kind of formed its identity in a kind of permanent style in teenage and early 20s. And so that,
this is why we can't really believe it, because it's an illusion. Some of it's good, some of it is not very good, but it is a condition that arises and ceases. So we get back to the constant refrain of sabbe sankhara anicca, all conditions are impermanent. And then the second statement of these two statements made by the Buddha, sabbe dhamma anatta, all Dhamma is not a person, not a separate entity, not a personality, not a separate force in the universe. It's not kind of a patriarchal God in the sky. It's reality here and now, and so we awaken to reality through this kind of ability to reflect on the way things are. The insight into suffering is to let go of it. But to let go of suffering, it doesn't mean that you just resist it or get rid of it. Because suffering is the first noble truth. The Buddha's first sermon was the first truth he announced to his disciples was there is suffering. So suffering is something to really understand, and to understand something you have to accept it. It's like this, suffering, feeling lonely, feeling frightened is like this. And then the question is, so that which is aware of suffering isn't suffering. The condition that you're aware of, if you grasp it, when you grasp it, then you start feeling I'm suffering. But if you're aware of the condition of suffering and not grasp it or let it go, then suffering ceases. It has no grounds to grow in and to perpetuate itself. And so this sense of letting go, and this is a good mantra for people at this time, is this mantra of letting go. And this is an insight into the Four Noble Truths. To see whatever you're feeling, whether you're trying to convince yourself everything's going to be okay, or everything's going to get worse, and then you can imagine, create a scenario where it's total destruction, and all human beings die from the coronavirus. You can take it to one extreme, or that it'll disappear tomorrow just magically, and everything's going to be okay. The desire mind wants to believe everything's going to be okay. And that's what we want to hear. We say, I ask you, how are you? You say, okay, or fine. That's what I want to hear. I don't want to hear really how you're frightened and lonely and not feeling well. More of a rhetorical answer is, how are you, Ajahn Sumedho? I'm fine. You are expecting me to go into details about, the feelings I'm experiencing in the present. Ajahn Sumedho's okay, it makes you feel good. And if I say Ajahn Sumedho isn't okay, then you can create a sense of worry, anxiety, fear about the future, just by thinking the fact that Ajahn Sumedho is not okay. And so it's as simple as that. Who is observing this? Who is aware of this way the thinking mind operates? It goes from one extreme to everything's going to be perfect, and the virus is going to disappear, and we'll all be happy. Is one, that means everything's going to be okay. Or we can hear, well, we don't know, this virus could last. I've heard reports that we're going to be isolated in our houses and apartments until 2022. No, that's not what you want to hear, is it? Nobody wants to hear that. But that's a possibility. The future is the unknown.
magically might disappear in the next day or so. But that's very unlikely. What is likely, what is happening right now is the thinking process is like this, whether it's positive and wishful thinking or fantasy or just anxiety, paranoia, fear, loneliness. Is there any reflection that can be used as a skillful way to counteract fear, or do you just recommend just acknowledging fear as it's like this right now as the best thing to do? Acknowledge fear's like this, it's impermanent, it's not self, it's not some kind of personal defect that, some kind of neuroses that you attach to. But it's the way it is. It's like this at this time. And like embracing it, or stop resisting it, not stop trying to get rid of it. Because that's the power of fear, is that makes you want to run away or resist it. None of us like to feel frightened. And so, living in Thailand where people believe in the reality of ghosts, you're dealing with a society brought up in the belief, the conditioned belief that ghosts exist. So ghosts you can imagine anywhere. Living in Buddhist monasteries, living in forests, there's ghosts in the jungle, ghosts under the trees, ghosts in the graveyards, the charnel grounds. And Luang Por Chah used to, in the years that I lived with Luang Por Chah, he would, because I didn't believe in ghosts, I didn't have that kind of fear conditioning. Then he'd get me to take samaneras, who are usually boys under, in their teenage boys, out into the graveyards and charnel grounds to spend the night, and I'd set them up in, quite separate from each other. But by the morning they were all huddled together because they interpreted the sound of the forest, animals walking on leaves, or the movement of the wind as ghosts, where I didn't. I think that's probably a squirrel or a rat, or, you can imagine it could be a snake if you want it. It's something threatening. But I never imagined ghosts. It's impossible. I've tried to believe in ghosts, but I can't do it because the early conditioning was there aren't any. Where the samaneras, the novices, their early conditioning is ghosts are real, real threat to human existence. And so, this is, are there ghosts, or aren't there ghosts? Do I have to make a statement and tell everybody there aren't any ghosts? I can't do that anymore. I used to be able to say with conviction, that's just superstition, there aren't any ghosts. But I can't say there are either. I don't know. But there's a knowing of I don't know. The awareness, when you don't know. That's awareness. It's a simple reality of here and now. And, I can, prefer my social conditioning to somebody else's, but that's just ego, that's a sense of I am, my thoughts, my social background, my cultural background, my family background, and it's better than somebody else's. That's all what they call conceptual proliferation. It's just the way we've been taught to think and react and create ourselves as a real kind of permanent personality. But in terms of conscious awareness, we're all the same. If we're looking for the point of equality among all sentient beings, what we share
in common with all sentient beings, whether it's all human beings or animal realm or whatever, the whole universe is consciousness. It's not personal. It's not my consciousness is different from yours. What I'm conscious of is different than yours. But the consciousness of here and now, this reality, this ability to apperceive rather than just to perceive or conceive. So thinking is we conceive. Perception is a function of the senses. And what overrides both the perceptions and conceptions is awareness, consciousness, which is aware that all conditions arise and cease. They have no personal kind of permanency of any sort. And then the insight into letting go allows us to prove this, not just to accept this because the Buddha said so. It's not like we have to believe in impermanence, because it's not a belief, it's a recognition of the way things actually are that you can see for yourself. Thank you very much, Long Paul. Enough for today. Zor. लुम्पो के रिफ्लेक्शन का हिंदी में अनुवाद करते थे, संक्षेप करते हैं। तो अजानसों को उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। पहला ये था कि एक सज्जन ने पूछा था कि वो अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे हैं, क्या किया जाए। वो कुछ ध्यान कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर सकते हैं और कुछ। तो ऊपर में उन्होंने जवाब दिया लुम्पोस ने कि सामान्यतः जब हम अकेले होते हैं तो अपने को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं इधर उधर से, किसी तरह से। कई तरीके हैं, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ देख लिया, लेकिन ज़्यादा कुशल तरीका होगा कि जो सचमुच में वस्तु स्थिति है उसको हम देखें, उसको समझें। जो भी हमारी की मन की स्थिति है उसको अगर हम देखेंगे और देखने वाले बने, राधा देन की जो स्थिति है उसके साथ तादात्म्य बनाएं, उसके साथ चिपके रहें, तो जो भी हमारे मन की स्थिति है वो, क्योंकि सारे मन की स्थितियाँ संखार हैं, वो अनित्य हैं, वो अपने आप बदल जाएंगी। और जब वो स्थितियाँ बदल जाती हैं तो मन शांत हो जाता है। तो जो हमारी आदत बनी हुई है बचपन से एक तरह से सोचने की, या तो अच्छा सोचना या बुरा सोचना, किसी भी तरह का सोचना, तो अननेसेसरी सोचने से परेशानी बढ़ती है, अकेलापन वगैरह सब। और अगले प्रश्न उनका जो पूछा था वो भय के बारे में था, वो भी उसका भी उत्तर ऐसा ही था कि भय जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई कमी है कि हमें भय जाग रहा है। भय एक बेसिक इमोशन है जो कि सभी मैमल्स को, जो भी रेप्टिलियन ब्रेन है उनके अंदर है। वो सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक तरीका था और वो हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इवोल्यूशन के दौरान हमको बचाने के लिए भय जागता था कि अगर एक शेर सामने खड़ा है तो भय जागेगा और हम तुरंत उसका एक्शन ले लेंगे। उस समय कोई सोचने का मौका ही नहीं होता
लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इस समय अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे हैं आराम से, चारों तरफ से सिक्योरिटी भी है, फिर भी हम डरे जा रहे हैं। तो वो सब डर जो है हमारी अपनी सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि भविष्य कभी भी जानना नहीं जा सकता। भविष्य बेसिकली अननोन है और हम चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें ही सुने। ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई हमें ये बता दे कि वायरस ख़त्म होने वाला है, या ये जल्दी से ठीक हो जाएगा सब, या सब कुछ ठीक हो जाएगा, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। वो जस्ट हम अपने आप को एक भ्रम में रख रहे हैं। वस्तुस्थिति किसी को मालूम नहीं है, क्या होगा कह नहीं सकते। तो भ्रम में रखना इस भय का कोई इसको सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि हम उसको फेस करें, देखें, समझें कि वो भी एक मन की स्थिति है जो अनित्य है और बदल जाएगी। तो अगर हम शांत चित्त से देखेंगे तो वो स्वतः ही बदल जाएगी उसका और मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जो देखने की हमारी क्षमता है, जो वेकेंड अवेयरनेस है, वो निष्प्रह है, वो जुड़ती नहीं है किसी के साथ। जैसे जान बार बार हमको कहते रहते हैं अपमादो अमृतम पदम, वही बात उन्होंने फिर दोहराई कि हम जितना सजग रहेंगे और जो हमारी टेंडेंसी है कि अप्रिय परिस्थिति है उसको हम दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो सब परेशानी का कारण बनती है। अगर हम उसको वस्तुस्थिति को एक्सेप्ट करें, रजिस्ट ना करें, क्योंकि भय का मुख्य प्रकटीकरण रेजिस्टेंस के रूप में होता है। हम उससे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन उस कारण से वो भय बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो हमको उसको समझना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा, आज भी हमने अभी चांटिंग में सुना कि जो भी परिस्थिति दुख है उसको समझना चाहिए, उससे दूर भागना नहीं चाहिए। हमारी जो सोचने की क्षमता है वो एक तरह से वरदान भी है, लेकिन कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है, क्योंकि हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भविष्य कैसा होगा, जो कि अननोन है। हम उसको नोन मान बनाना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि कोई हमें आके कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा कहना, ऐसा सोचना एक उचित चीज़ नहीं है, क्योंकि उससे भय बढ़ता ही है। तो आजकल के समय में जो मुख्य बातें हैं, सभ्य संखारा अनिच्चा, सभ्य धम्मा अनत्ता, इन दोनों को हम याद करें और इसके साथ जीवन जिएंगे तो कष्ट कम होगा और तब हम त्याग कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। जो भी मन स्थिति जागेगी, वी जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट इट गो, तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अपना उदाहरण देकर बताया कि अगर कोई आप आजकल सामान्य सा कोई भी पूछता है कैसे हो, तो हम कहते हैं ठीक है। जैसे कोई मुझसे पूछे और मैं कहूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप अननेसेसरी सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। तो ये विचार हमारे इस तरह के चलते रहते हैं और हम ये विचार इसलिए हम चाहते हैं कोई आगे हमसे कह दे कि हाँ ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता। क्या मालूम सारी मनुष्य जाति ख़त्म हो जाए, और क्या मालूम कल ही सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ मालूम नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो जो तीसरा प्रश्न था कि क्या स्किलफुल वे क्या है, उन्होंने कहा था कि यही है कि हम एक्नॉलेज करें भय को, एक डिफेक्ट न माने, ये परिस्थिति है, ऐसी परिस्थितियों में भय जागता ही है, ये स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर दिया गया, कंडीशनिंग की बात भी होती है। जैसे थाईलैंड में लोग विश्वास करते हैं भूत प्रेत में, लेकिन अपनी उदाहरण बताते थे कि मुझे नहीं विश्वास था, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। और जान चाह उनको भेजते रहते थे कि तुम ये नए सामने आए हैं यंग बच्चे, इनको ले जाओ जहाँ शमशान घाट पे और बैठो उनके साथ। तो वो लोग घबराते रहते थे। मैं बताते थे कि हम उनको दूर दूर बैठने को कहते थे, और धीरे धीरे सब पास आके चिपक जाते थे, क्योंकि ज़रा भी जंगल में आवाज़ आती थी तो वो समझते थे कि भूत आ रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ मानता ही नहीं था। तो ये सब कंडीशनिंग के कारण हो रहा है, इसलिए वो समझा रहे थे कि ये भय भी एक तरह की कंडीशन ही है। तो ये भी हमको सीखना होगा कि हमें मालूम नहीं है, और इसके साथ भी हम जीना सीखें कि भविष्य क्या होगा हमें नहीं मालूम, हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो। उस बात को भी हमको एक्सेप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि मुझे नहीं मालूम, और अगर हम सचमुच में उसको एक्सेप्ट कर लें तो मन शांत हो जाता है।
ये कहना कि मैं जिस तरह से सोचता हूँ ठीक है, दूसरा जिस तरह से सोचता है गलत है, वो तो ईगो की बात होगी। इसलिए ये एक्सेप्ट करना बहुत सहज है कि मालूम नहीं भविष्य कैसा होगा, और उसको भी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे तो सचमुच में भय समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, फिर ब्रह्म विहारों का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर 5-10 मिनट ध्यान और कर लेते हैं, मन शांत कर लेते हैं।
विकार सब हम ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं। पहले मैत्री ब्रह्म विहार। अपने प्रति मैत्री, हमारा चित्त वैर से मुक्त हो, द्वेष से मुक्त हो, चिंता से मुक्त हो, और हम अपना संरक्षण सुखपूर्वक कर सकें। और यही शुभकामनाएं सभी के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, माता पिता, भाई बहन, आचार्य, सहधर्मचारी, सबके प्रति। और फिर हमारे घरों का, देश का, विश्व का आरक्षण करने वाले देवताओं के प्रति, ये सब प्रसन्न रहें, रुष्ट न हो। अहं अवैरोमि अव्यापज्योमि अनिगोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। मम माता पितु आचर्या च ज्ञातिमित्ता च सब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। हम करुणा ब्रह्म विहार उरकत कुरुते ये कुर्वे नहीं बोल आरक कर लिया। सचार में ब्रह्म रखा देवता, भूमट्ठा देवता, रुखट्ठा देवता, आकाशट्ठा देवता, अविराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। शरीर प्राणी
अब सभी प्राणियों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति, और प्रयास करते हैं उनके प्रति भी जिनके प्रति किसी भी कारण से मन में रिजेंटमेंट है, द्वेष है, उनके प्रति भी प्रयास करते हैं। जो हमें लगता है कि इस परिस्थिति में नासमझी के कारण रोग को फैला रहे हैं, उनके मन से भी द्वेष निकले, चिंता मुक्त हों, दुर्भावना मुक्त हों। सर्वे सत्ता सर्वे पाना सर्वे भूता सर्वे पुंगला सर्वे अत्ता भाव पर्यापन्ना सम्मा इत्यो सर्वे पुरुषा सर्वे अर्या सर्वे अनर्या सर्वे देवा सर्वे मनुष्या सर्वे विनिपातिका अवीरा होन्तु अव्यापज्या होन्तु अनीगा होन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब करुणा ब्रह्म विहार उन सभी लाखों करोड़ों लोगों के प्रति जो किसी न किसी प्रकार से रोग के कारण, प्रियों से विछोह के कारण, घर में बंद होने के कारण, व्यवसाय बंद होने के कारण दुखी हैं, उन सब के प्रति शुभकामनाएं। दुख शीघ्र दूर हो, रोग कष्ट कटे है, रोग का कष्ट कटे, उपचार सुलभ हो पाए। सब्बीतियो विभज्जन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको भव सुखी दीर्घायुको। अब कृतज्ञता ज्ञापन सबके प्रति जो इस दुख को कम करने में सहायता कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, दवा देने वाले के रूप में, सफाई करने वाले के रूप में, पुलिस वाले के रूप में, व्यापारी के रूप में, सामान लाने वाले बच्चों के रूप में, सबका आभार। सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये रोग से ग्रस्त न हो पाए, बचे रहें। और आभार के रूप में अपने पुण्यों का फल उनके साथ साझा करते हैं। पुण्यस्य इदानि यानि अन्यानि कथानि मे तेषां च भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। मुदिता ब्रह्म विहार, जो लोग स्वस्थ हो गए हैं, रोग से मुक्त हो गए हैं, वो भी हजारों लोग हैं। उनकी प्रसन्नता में हम भागीदार होते हैं। और भी लोग जो अपने कर्मों के कारण, परिस्थितियों के कारण प्रसन्न हैं, जिनको हम जानते हैं, उन सब की खुशी में हम शामिल होते हैं। कि खुशी बनी रहे, सुख संपत्ति बनी रहे, उनसे दूर ना हो, ऐसी शुभकामनाएं। यथा लब्धा संपत्तितो मा विगच्छन्तु। अंत में
उपेक्षा ब्रह्म विहार इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, ताकि हम दुख से व्यथित ना हों, सुख से एक्साइट ना हों, समता बनी रहे। सभी परिस्थितियाँ अनित्य हैं, इस बात को याद करके भी मन को समता में लाने का प्रयास करते हैं। और जो अपरेंटली दुख के कारण है उनके प्रति रोष जागता है, उसके लिए कर्म सिद्धांत का याद करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे अपने कर्मों का ही फल है, कहीं ना कहीं अभी का, पिछले जन्मों का, सारी कलेक्टिव मैनकाइंड के कर्मों का। कम्मस्य का कम्म दाया दा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरण यम कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य भविष्यन्ति। और समता बनाने में दुख सत्य को समझना, चारों आर्य सत्यों का अवेच पश्यति निरंतर देखना, ताकि हमारी दृष्टि सम्यक हो, हमसे कोई और गलत काम ना हो, किसी से भी कोई गलत काम ना हो। हाँ, ये शुभ कामना करें कि सबकी दृष्टि सम्यक हो। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु च खेमिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमा, किञ्चित् दुःखमागमा, मा किञ्चित् दुःखमागमा। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।